Good morning, students. Welcome back to the online classes of Resonance. I'm Saloni Sada, Faculty of English. So, our today's topic is pronoun. I taught you several types of pronoun in the last lecture. In this lecture, we are going to continue those types. So, starting from indefinite pronouns. What are these? These are used for non-specific nouns. Non-specific means something which is not definite. It can be any person, it can be any place, animal, or anything. It can be any idea as well. Okay, noun can include anything. So let's see some examples. Someone, somebody, all, few, both, several, many, few, anything, anybody. Do you know whom are we referring to over here? No. In general, we are saying. Okay, we are not taking any particular name over here. If I say someone, if I say someone is waiting for me outside, do I know who that person is? No, I don't know. So something non-specific I'm talking about. So such pronouns which point out anything non-specific are indefinite pronouns. Let's have some examples. Everyone enjoyed the movie. Yes, students, it is clearly understood that everyone is an indefinite pronoun in this sentence. Everyone enjoyed the movie. We are not talking about any particular person. Then all the students enjoy studying online. Here all is indefinite pronoun. So I hope this is clear to all of you. Let's move on further. The next category is relative pronouns. Relative pronouns. Now, as the name suggests, relative, something that relates to something. Okay, let's see what does it relate to. These pronouns are used to relate to the word they modify. Now, what are relative pronouns? It relates to the word that it modifies. Now, what can be such word? Let's see. It relates to the antecedent. I'm using one term, antecedent. Now, what is this term? Actually, antecedent is a noun to which a relative pronoun relates. It is a noun to which a relative pronoun relates. Now we'll understand what is antecedent with the help of several examples. First of all, let us know what comes under the category of relative pronoun. Now, if I say whom, which, that, or let's say whom, or whomever, etc. I'm writing over here. So these words come under the category of relative pronoun. Now you must be thinking that, ma'am, who was a question word, then which is also a question word. See, when we use these words in form of a question, then they are interrogative pronouns. But here, who and which won't be used to ask questions. Okay, we'll use them differently. How? Let's see. I'm writing few sentences over here. The boy who was punished, the boy who was punished is my friend. See, I've written an example, the boy who was punished is my friend. I have used the word who over here. Am I asking a question in this sentence? No. So this word who is not an interrogative pronoun over here. It is used as relative pronoun over here. Okay. Now this who, it relates to the boy. Yes or no? Who is a relative pronoun and it relates to the boy. So what is the antecedent over here?
The boy is the antecedent. The boy is the antecedent. I'm marking A over here. Relative pronoun relates to a noun that it modifies. So who किसको relate कर रहा है यहाँ पर? Who relates to the boy. So boy क्या हुआ यहाँ पर? Boy is the antecedent. Let's see some more examples. Another example. The horse which is black won the race. Okay, I've written a sentence. The horse which is black won the race. Now here I've used which. It is clearly understood that I'm not asking a question over here. Here which is a relative pronoun that relates to the horse. So what is the antecedent over here? Which जिसको relate कर रहा है, relative pronoun जिसको relate करता है वो होता है antecedent. तो which किसके लिए use हुआ है? Horse के लिए, तो यहाँ पर antecedent हुआ horse. So I'm marking this as A. A refers to antecedent. ये हमने term बना ली है एक हमारी खुद की. तो horse को कौन describe कर रहा है यहाँ पर? Which. Similarly, we can use that, we can use whom. Let's see some more examples. Now, one more thing I want to highlight over here. If you notice these two examples, or any example you take of relative pronoun, you will see one thing, that these pronouns, they are also used as conjunctions. These are also used as conjunctions. Means they also join phrases or clauses. Okay. Now, this was one part. Sorry. This was one part of the definition. One more thing that I want to highlight is that relative pronoun is also used as conjunction and it links the sentences. Okay. It may join a phrase or a clause. Okay. See, over here, the boy who was punished is my friend. I have joined the horse which is black won the race. Some more examples. Let me write it here. I have written one more example over here. The book that I read is very interesting. Okay. So that here relates to the book. So the book is antecedent and that is a relative pronoun. That is what? It is a relative pronoun. So I hope this is clear to all of you. Nothing difficult over here. One more thing I want to highlight. When to use which relative pronoun. कब किस sentence में हम ये जो relative pronouns यहाँ लिखे हैं हमने, इनमें से हम कौन सा कब use करेंगे ये हम देखेंगे. Who? It is used only for persons. Whenever we will talk about persons, we will not use which over there. We will use who or we can use whom. Whom भी हम use कर सकते हैं persons के लिए. But difference क्या होगा कब हम who use करेंगे और कब हम whom use करेंगे. Understand, whom जो है, whom is used more formally. Okay, whom जो है, it is used more formally. Whom is used more formally. This is the difference. When to use who and when to use whom. Okay, but when we talk about animals,
We cannot use who or we cannot use whom. Okay, so when we are talking about animals, which relative pronoun can we use? We can use either which. Okay, we can use that also. That can also be used. Okay, I'm rubbing this part. We can use which for animals or things. We can use which for animals or things. But we can use who only for persons. We can use whom only for persons. And when we talk about that can be used for all. That can be used with persons, animals, or things. Remember this thing. Who is used for persons, which is used for animals and things, but not for persons. That can be used with all. We can use that to refer to any person or any animal or anything, but whom cannot be used for animal, whom cannot be used for thing. It can only be used for persons, and that too very formally. Okay, formally means जब हम बहुत ऑफिशियल वे में बात करते हैं, जब हम बहुत फ्रेंडली वे में बात नहीं करते, ठीक है, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग टू एनी स्ट्रेंजर और एनी पर्सन हु इज अ कलीग और एनी ऑफिस पर्सन, then we are very formal in our tone. Okay, then we use whom. So I hope relative pronoun is clear to all of you. It joins also two phrases. So let us discuss the rules of pronoun now. One more thing I want to tell you, there is one category of pronoun which we call possessive pronoun. In the last class also I mentioned about it. What is possessive pronoun? Which represents any ownership. Possessive pronoun represents any ownership. Possessive pronouns, these represent ownership, or you can say possession. Example is very simple. When I say mine, this book is mine. Okay, this shop is hers. Okay, किसकी शॉप है? उसकी शॉप है. So what we'll call it in English? This shop is hers. This book is mine. ये मेरी बुक है. तो possession बता रहा है, मेरा मालिकाना हक बता रही हूँ मैं, मेरी ownership है उस पे. So such words come under the category of possessive pronouns like mine, yours. Fine. Then we can say theirs, or you can say his, hers, theirs. Fine. So these are possessive cases of pronoun. Now I'll tell you one table. We have studied all the categories of pronoun. Now I'll make one table over here on the board. It is also given in your module. Just pay attention to it. It will represent different cases of pronoun. Okay, just as we studied the cases of noun, similarly we have cases of pronoun as well. And why are we studying these cases? Because when we'll further come on to the rules, then you need to have knowledge of these cases. Okay, so I'm making a table over here. Please pay attention. Person, first person, singular and plural. Then comes the second person. In this singular and plural, same. And then comes the third person. In this singular
and then plural. Now I'll make different columns like nominative, or we can call it subjective. Subjective. Then comes objective. Objectives. Here I'm writing nominatives. Okay, subjectives. And then comes, after objectives, possessive. Possessive pronoun and possessive adjective. Please pay attention. I have made two columns. This is very important. Possessive pronoun and possessive adjective I've included over here. We'll understand the difference between the two. Generally, students don't understand the difference. And the last category is reflexive or emphatic. Reflexive or emphatic. These are different cases of pronoun. We are studying the cases of pronoun. This is the topic. Now, the main thing that I want to highlight is the difference between these two categories. Let's see what is the difference. This is the form. Okay. Like in first person, we have singular form, then plural, then in second person, singular and plural is same. Then in third person, singular and plural form is there. Now, what was first person? The person speaking. Okay. Then what was second person? The person spoken to, you can say. Second person, spoken to. Okay. Third person, spoken of. जिसकी हम बात कर रहे थे वो होता है थर्ड पर्सन. ओके. नाउ सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन singular form, what will come over here? I. I is singular. And if we talk about first person plural, then it should be we. Okay. Then objective case. Okay, this is the subjective case. When we will use a pronoun in a sentence on the place of a subject, then we will use the subjective case. We also call it nominatives. Remember this thing, because when we'll study the rules, it will be helpful for you, because rules are based on these things. Then objectives. Whenever we use a pronoun at the place of an object, then we will use it in objective case. What is the objective case? Suppose I is here, then objective case of I is me. If we talk about objective case of we, plural, then it should be us. Then similarly, in second person, you, जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन, जो बोल रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन. सो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है. एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू, बोलने वाली मैं, तो फर्स्ट पर्सन आई, यू सुनने वाला. ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन. सिमिलरली, अच्छा, अगर मैं एक जने से बात करूं या दो जने से, मैं उसको यू ही बोलूंगी. यस और नो? सपोज आई एम टॉकिंग, ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं, तो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे हम बोलते हैं, लेट वी अंडरस्टैंड नहीं बोलते. ठीक है, वैसे हम जब सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो क्या मैं यू की जगह कुछ और बोल सकती हूँ? आप, एक ही स्टूडेंट बैठा है मेरे सामने, फॉर एग्जाम्पल, मैं उनसे बोलूंगी आर यू लिसनिंग?
ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे बैठे मेरे सामने तो भी मैं यूं ही बोलूंगी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड। चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, मैंने यू वर्ड ही यूज किया, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। ओके, सो इनका सेम होता है। सिमिलरली थर्ड, इन केस ऑफ थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, वी हैव थ्री केसेस। पहला तो सिंगुलर में ही आएगा, दूसरा सिंगुलर में शी है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट भी आता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन प्लूरल, देन व्हाट विल कम ओवर हियर, दे। Okay, so I hope this difference is clear. Now let us see he. What should be the objective of he? It should be him. She, her. It, it. Objective of it is it only. Okay. They, it should be them. They का objective होता है them. Let's come on to the possessive pronoun. अभी हमने पढ़ा था what is a possessive pronoun, which shows ownership. Okay, so when we are talking about I, or let's say me, then possessive pronoun will be mine. Okay, and what will be the possessive adjective? Very important difference. My will come over here. Okay, I subjective case, me objective case, mine जो होता है वो pronoun है, और my जो होता है adjective है. अब इन दोनों का difference मैं आपको समझाती हूँ. Let me complete the table first. रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? वी स्टडीड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. सेल्फ जिनके आगे लगता है वो होते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक. अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज हुआ है सेंटेंस में. इफ इट इज यूज टू emphasize the importance of the subject, then it is emphatic pronoun, but if it is used differently, then we call it reflexive. So यहाँ पर इसका reflexive part या emphatic part होगा myself. Similarly, if we talk about plural of first person, we, subjective case, us, objective case, possessive pronoun will be ours. आप देखना यहाँ पर s लग रहा है सब में, ours. यहाँ पर only r. यहाँ पर s नहीं आएगा. This is the difference. And here we will write ourselves. Ourselves. Now one point I want to tell you, please don't write it ourself. वो गलत हो जाएगा. यहाँ पर ourself नहीं होएगा. This is wrong. क्या होना चाहिए? Ourselves. Why? Because our जो है R, ये already plural है. ठीक है, सेल्फ यूज होता है सिंगुलर के लिए. यहाँ my सिंगुलर था इसलिए सेल्फ लगा. R is already plural, so we cannot use self with it. We will use selves. selves. Please remember this thing. So next thing, you. Here I'll write yours. I have written s over here, but here I will write only your. What is the difference? Only the difference of s is there. Similarly, here yourself or yourselves. Now you must be thinking that why have I written yourself and yourselves both? Because in case of second person, singular and plural are in the same form. Okay, singular भी हो सकता है you plural भी हो सकता है. तो अगर हम you को singular form में use करें तो yourself आएगा. You do it yourself. And if I'm talking to many of the students, then I will say you have to do it yourselves. Fine, like this. Let's discuss this third person, he, him. Here we'll write his. Possessive case है, ये उसका है. ठीक है, लड़के की बात हो रही है तो his. लड़की की चीज की बात हो रही है तो hers. And यहाँ पर कुछ नहीं आएगा. Okay, there is no possessive case of it. But when we talk about possessive adjective, then his will remain his only. हम यहाँ पर his is नहीं बोलेंगे. His is नहीं होता. Okay, we have, okay, let me tell you, यहाँ पर his is नहीं आएगा. This is wrong. सिर्फ single s already. ठीक है, so this and this are same.
But if we talk about a girl, then we will remove S and only her will come. Fine. Now, when we talk about the possessive adjective of it, then we will write its. यहाँ पर its आएगा. Possessive pronoun won't take its with it. I will explain you why it's come under the category of possessive adjective. There is an example. Now let's see the emphatic case. It should be himself and it should be herself. And when we talk about it, we'll write itself. Okay? Itself is no word. ठीक है, सिर्फ itself ही आएगा. Then last category, plural of third person, they, them. Then over here, possessive pronoun, their, theirs. Okay? And here, in case of possessive adjective, we will write their. We will remove S. And when we talk about reflexive case, then we will write themselves. Okay? Now again pay attention that I have written themselves, S-E-L-V-E-S. I have not written themself. S-E-L-F क्यों नहीं लिखा? क्योंकि them जो है, it is plural. And with plurals, we use selves. But with singular, we use self. Fine? I hope this is clearly understood. Now let us understand one difference, that why its is used over here. You only understand the difference. Possessive pronoun or possessive adjective में क्या difference है? I'm rubbing this entire table. Please have a final look of over it. I will rub it. So I hope these rules are clear regarding the cases. Now we'll study further the rules of pronoun. I'll write few sentences. Please pay attention. I am talking to you. Here I, because I have used it at the place of the subject, so I have used the subjective case. Okay? But you, it is the speaker, it is the listener, so you is written at the place of the object. If I write, he gave his book to me. Now see, he, usne, third person. Okay? Gave his book, his, and it is followed by a noun. ठीक है? His के आगे एक noun आ रहा है, तो यहाँ पर his क्या हुआ? His एक possessive pronoun हुआ या possessive adjective हुआ? देखो यहाँ पे भी his है और यहाँ पे भी his है. अब यहाँ पर हम इस sentence में his को क्या मानेंगे? यहाँ पर his, because it is followed by a noun. Okay? His is followed by a noun. So this is possessive adjective. Possessive adjective. Remember one thing, possessive adjectives are followed by nouns. You can write over here, you can put a note. Possessive adjectives are followed by nouns. Possessive adjective is followed by a noun. Okay. Now here me. Me is what? Objective case. So I have written the objective case. यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखा I. If I write I over here, then it will be wrong. See, he gave his book to I. No. We are writing the object over here. So object should be in the objective case. तो उसने मुझे book दी, तो I will write me. Fine. Another example. If I say, this book is my, is this correct? Or if I write, this book is mine, which sentence is correct? I think this is correct and this is wrong. Why? Because here mine is possessive pronoun. लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर my आ रहा है, और my क्या होता है? My is possessive adjective. Okay? And possessive adjectives
these are followed by nouns. It is necessary. Okay, possessive adjectives are followed by nouns. क्या यहाँ पर my के आगे noun आ रहा है? नहीं आ रहा. So this sentence is wrong. Possessive adjective यूज किया है तो आगे noun आना जरूरी था, लेकिन नहीं आ रहा तो ये sentence ही गलत है. So the correct way to say this sentence is this book is mine. तो यहाँ पर possessive pronoun लगेगा, possessive adjective नहीं लगेगा. Okay. Then इसी चीज को अगर मुझे possessive adjective की तरह यूज करना है तो I will say this is my book. अब सही है सेंटेंस, दिस इज माई बुक. अब मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया और उसके आगे देखो नाउन आ रहा है. सो नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, सो हियर माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन in the next sentence is possessive pronoun. Okay, so this is complete over here. Now we'll further study the rules of pronoun. The rules of pronoun. Rule number 1. How do we use a pronoun in a sentence? Suppose there are 3 persons. Okay, first, second, and third. Now, what should be the order of these persons? You only tell me. It is based on the order of pronoun. Order of pronoun. Okay. Now, I will write examples over here. You only tell me what should come. Now, I have written 4 sentences. Identify which is the correct order of pronoun. मैं पहले चाहूँ तो you लिख लूँ, मैं पहले चाहूँ तो I लिख लूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख लूँ I, he and you. Okay, are to work together. But क्या ये सही है? Is it right? See, when we speak the sentence, we don't think much. ठीक है, कैजुअली जब हम बोलते हैं हम कुछ भी बोल देते हैं, जो हमारा मन करता है हम वो बोल देते हैं. बट इज दैट ग्रामेटिकली करेक्ट? No, it is not at all correct. There is a proper order in which we have to use the pronoun. Now, which is the correct order over here? Identify. There are so many sentences and it looks like a puzzle. Yes, कि पहले ये लगाएं या ये लगाएं. Okay, understand. Here, I, he and you are to work together. Okay, first of all, understand. What is the difference? The rule says when we talk about any good results, okay, then the order should be 2, 3 and 1. Okay, but when we talk about any negative one, for admitting guilt, you can say, for admitting guilt,
for admitting guilt or negative ones or negative results. The order is 1, 2, and 3. So this is the order. So this is the rule. Whenever in a sentence we come to know that we are talking about any positive case. Okay, good result means the positive case. Okay, good results means positive case, but when we are talking about any negative case, then we will use 1, 2 and 3. This should be the order. Here 2, 3, 1 means person. जो पर्सन की बात हो रही है कि पहले हम कौन सा पर्सन यूज करेंगे. पॉजिटिव रिजल्ट है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. नेगेटिव है तो पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड, देन थर्ड. नाउ रीड द सेंटेंस. यू, आई एंड ही आर टू वर्क टुगेदर. आर टू वर्क टुगेदर जो है, इज इट एनीथिंग नेगेटिव? हमें इन तीन लोगों को साथ में काम करना है. क्या ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है आपको? नहीं. Is this sentence highlighting any negative trait or any negative thought? No. There is no negative result. So we will apply this rule. It is a positive case. So the order of pronoun should be second person will come first, then third person, then first person. So second person is coming here, but then first person is coming here. लेकिन हमारे rule के हिसाब से कौन सा person आना चाहिए? Third person. तो हमारा पहला sentence गलत है. Fine, the sentence is wrong. Let's see the second sentence. You, he and I. तो हमारा order 2, 3, 1 होना चाहिए. तो second person, yes, यहाँ पर second person है. उसके बाद he, third person, yes, third person है. And then first person आना चाहिए तो I, first person है. So this is the correct order. Okay, and the result is positive. So this is a correct sentence. If we talk about the third sentence, he, you and I. पहले कौन सा आ गया? पहले थर्ड पर्सन आ रहा है, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. 3, 2, 1. 3, 2, 1 तो कब आना चाहिए? जब हमारा नेगेटिव रिजल्ट हो, तब हम 1, 2, 3 तब आना चाहिए जब नेगेटिव रिजल्ट हो. तो यहाँ तो 3, 2, 1 आ रहा है, तो ये भी गलत है. देन ही, आई एंड यू, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. 3, 1, 2 is again a wrong order. So only this sentence is correct. Second one. Rest all the sentences are wrong. So remember this thing when you use pronoun in a sentence while speaking. Now let me give you example of any negative case. Another example. He, you and I are responsible for the mistake. Are responsible for the mistake. Now identify. Are responsible for the mistake. यहाँ पर कोई मिस्टेक की बात हो रही है, मीन्स कुछ नेगेटिव हुआ है. ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव हुआ है, तो हम कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. सो क्या यहाँ पर कौन सा पर्सन आ रहा है? पहले यहाँ थर्ड पर्सन आ रहा है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट. 3, 2, 1 हो गया, जबकि होना क्या चाहिए? 1, 2, 3. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो द राइट सेंटेंस विल बी, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन, आई, यू, एंड देन थर्ड पर्सन, ही, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक. अब ये सही हो गया सेंटेंस. ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका, एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको कैसे याद रहेगा ये चीज. देखो, बहुत सिंपल है. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि मैम हम याद नहीं रख पाएंगे कि पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, या फिर नेगेटिव केस है तो पहले 1, 2, 3 कंफ्यूजन हो जाता है. इजी सी एक ट्रिक है याद रखने की. इंडिया में कल्चर है, कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कुछ अच्छा होता है, कुछ पॉजिटिव होता है हमारी लाइफ में, तो हम उसका क्रेडिट पहले दूसरे को देते हैं कि अरे सर आपकी वजह से, बस आपकी दुआएं थी. ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं. तो पहले हमने दूसरे को क्रेडिट दिया, उसके बाद आपकी दुआ थी,
फिर उनकी भी दुआएं थी हमारे साथ, इसलिए अच्छा अच्छा हुआ। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो हमारी वजह से। ठीक है, तो लास्ट में हमने फर्स्ट पर्सन को रखा। तो कुछ पॉजिटिव होता है तो हमारे इंडियन कल्चर में यही है कि हम पहले दूसरों को थैंक यू बोलते हैं, फिर किसी तीसरे को थैंक यू बोलते हैं, और लास्ट में हम खुद का क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है याद रखने का पॉजिटिव केस में। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो इंडिया में यही कल्चर है, कुछ गलत हो गया तो पहले खुद की गलती माननी है, उसके बाद दूसरे की, फिर तीसरे की। तो कुछ नेगेटिव हुआ तो पहले खुद से गलत हुआ, फिर किसी दूसरे को दोषी ठहराओ, उसके बाद किसी तीसरे को बोलो। तो ये एक ट्रिक है याद रखने की इस ऑर्डर को। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू रूल नंबर 2. Now rule number 2 says, so I have written few sentences on the board. Now identify which one is correct. According to rule number 2, how we'll identify the correct sentence? See, whenever we are comparing, okay, then whenever we are comparing two pronouns, then they should be compared in the same form. Okay, either we'll compare two objectives, okay, or we'll compare two subjectives. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉलर देन मी, यहां पर ही को कंपेयर किया जा रहा है इससे, ऑब्जेक्ट से। सिमिलरली यहां पर ही को कंपेयर किया है एक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब ही इज विच केस? ही इज इन सब्जेक्टिव केस। ओके, ही इज विच केस? ही इज सब्जेक्टिव केस। दिस एंड दिस, ये दोनों सब्जेक्टिव हैं। यस, और वी कैन कॉल इट नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव बोलो या नॉमिनेटिव्स बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको। ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस है क्योंकि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, लेकिन यहां पर मी ये तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन, द थिंग्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड, ओके, दे शुड बी इन द सेम केस। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, लेकिन मी तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो गया। He is taller than I is the correct sentence. So I hope many students must be confused that, ma'am, we never heard this. We always speak in general that he is taller than me. Yes, but the rule of pronoun says something different. It says that two subjectives are compared and two objectives are compared. This is an example of comparison of two subjects. Two subjectives are compared. And here, two objectives are compared. Two objectives are compared. So, if I am saying two objectives are compared, तो यहाँ comparison किस में हो रहा है? See, her mother appreciates. Appreciate मतलब वो admire करती है, तारीफ करती है, मानती है किसको? You more than. अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? I आना चाहिए या me आना चाहिए? मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दी है। दिस इज द रूल, टू ऑब्जेक्टिव्स आर कंपेयर्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट तो हो गया ये u, ओके,
एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आएगा, पर इनमें से कौन सा आएगा? तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो आए तो सब्जेक्टिव केस हो गया, सो दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मी. तो अब क्या होगा हमारा सेंटेंस? हर मदर अप्रिशिएट्स यू मोर देन मी. ओके, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, मी भी ऑब्जेक्ट हो गया. ऊपर देखते हैं, ही इज टॉलर देन आई. यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमने मी नहीं लिखा, सब्जेक्टिव केस में लिखा आई. दिस इज द रूल नंबर 2. आई होप इट इज अंडरस्टूड. It is clearly given in your module also. Okay. Now the third rule. In simple words, if I summarize rule number 2, in simple words, a pronoun in subjective form will be compared to a pronoun in subjective form only. Okay. And a pronoun in objective form will be compared to a pronoun of objective form only. In simple words, I explained you rule number 2. Next rule, rule number 3. With let or any preposition you can say, any preposition, कोई सी भी preposition हो सकती है वो, या फिर between. Okay, we use which form of pronoun? Let's see, I'm writing an example. Let I ask a question. Let I ask a question. Is this sentence correct? Have you ever heard such a sentence? No. What have you heard? You must have heard let me ask a question. Yes. So let me ask a question. Okay. Let them enter the room. What have I written? Let they or them enter the room. What should come? यहाँ पर तो them आएगा, they नहीं आएगा. And यहाँ पर कौन सा correct है? Let I ask a question? No. This is wrong. What is the correct answer? Let me ask a question. This is correct. So the rule says, with let or with any preposition or with the word between, we use objective case of pronoun. Objective case of pronoun. ओके, दिस इज द रूल. तो आप देखिए यहाँ पर लेट यूज हुआ था, इसके साथ में मैंने ऑब्जेक्टिव केस लगाया प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस गलत था. सिमिलरली यहाँ पर लेट दे तो होता है सब्जेक्टिव केस, ये नहीं आएगा, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा. अब बात करते हैं बिटवीन की. सिमिलरली एनी प्रेपोजिशन, हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज करेंगे उसके साथ भी ऐसा ही है. बिटवीन की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. बिटवीन, देयर इज no harmony between you and, you only tell me what should come, I or me. Here I have used a word between. ठीक है, between आ गया देखो. अच्छा, हार्मनी क्या होता है? हार्मनी मीन्स यूनिटी. ठीक है, एकता. ठीक है, so there is no harmony. Harmony means there is no unity between you and. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब भी बिटवीन यूज होएगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे प्रोनाउन का. तो यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो सही है. अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई या मी? मी. सो आई इज रॉन्ग एंड मी इज द राइट आंसर. तो देयर इज नो हार्मनी बिटवीन यू एंड मी. ठीक है, बिटवीन के साथ हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया. I hope this is clear. Now, the next rule. Rule number 4.
Rule number 4. Possessive case of pronoun एक indefinite pronoun की बात कर रहे हैं हम. Possessive case of indefinite pronoun 1 is. अब हम इसका possessive case देखेंगे क्या होता है. क्या होना चाहिए इसका possessive case? Let's see. I'm writing some example. One must respect one's parents. Now, which sentence is correct? Identify. So here, one must respect one's parents. This sentence is wrong. The correct sentence is this, because the possessive case of one is once. One क्या है? एक indefinite pronoun है और इसका possessive case की बात हो रही है which shows ownership. तो यहाँ पर आप देखिए one must respect one's parents. One का मतलब यहाँ पर है हर individual को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसके पेरेंट्स का. ठीक है, सो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज अ रॉन्ग वे एंड दिस इज द राइट वे. फाइन, सो द सेंटेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5. Now, next rule says, rule number 5, there are some verbs. कुछ verbs क्या होते हैं? Action words. अब मैंने कुछ examples board पे लिखे हैं. These examples are already given in your module and I've also provided notes to you people. So you can see over there the list is given. Now, what are these verbs? Hurt, cheat, introduce, present, absent, prostate, enjoy. इस तरह की जब भी verbs use होती हैं किसी sentence में, then these are followed by either an object, या तो इनके आगे कोई object आएगा या फिर एक reflexive pronoun आएगा. This is the rule. इन verbs के आगे ये जो bracket में लिखी हैं,
इनके आगे या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. अंडरस्टैंड? ही हर्ट्स हिमसेल्फ. अब देखो, हर्ट, फाइन, यहां पर मैंने हर्ट्स लिखा है. सो आई हैव यूज्ड हिमसेल्फ विच इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, तो हमने यही पढ़ा था रूल में कि या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा. तो हर्ट के बाद देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया. कैन आई राइट लाइक दिस? ही हर्ट्स आई. Can I write like this? No, I cannot write it like this. Okay. Next is, अच्छा, अब इस सेंटेंस में he hurts या तो himself हो सकता है या फिर मैं इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा सकती हूँ. he hurts. अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर तो I तो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव केस है. तो ऑब्जेक्टिव केस है तो मैं यहाँ पर me तो लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हर्ट विल बी फॉलोड बाय either an object or a reflexive pronoun. I hope this is clear. Let's see another example. He hits them. Now see, he hits them. Who is the doer of action? He. Doer कौन होता है? जो काम कर रहा है. किसको इसने मारा? ठीक है, इनको मारा. ठीक है, so them is what over here? Them is object. Them is ऑब्जेक्ट. तो आप देखिए हिट जो है उसके बाद में देम ऑब्जेक्ट आ रहा है एक. ओके, अनदर एग्जांपल, ही एंजॉयड द पार्टी. नाउ एंजॉयड ये भी एक वर्ब है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट यू कैन ऐड ओवर हियर. एंजॉय भी आता है, बहुत सारी वर्ब्स हैं. इंट्रोड्यूस आता है, प्रेजेंट. तो ही एंजॉयड द पार्टी, यहाँ पर द पार्टी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, क्या चीज एंजॉय करी? ऑब्जेक्ट. किसको ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? पार्टी की बात हो रही है. फाइन. सिमिलरली इंट्रोड्यूस, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज मदर टू ऑल ऑफ अस. यस, तो अब देखो इंट्रोड्यूस्ड यूज हुआ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, मैं चाहती तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज कर सकती थी. ही इंट्रोड्यूस्ड, या तो हिज मदर आएगा या फिर हिमसेल्फ, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. सो दिस इज रूल नंबर 5. एंड नाउ द लास्ट रूल ऑफ प्रोनाउन फॉर क्लास 8. Rule 6. Now here we need to understand the forms of verb be. Okay, forms of, or let me write, after any form of verb be, after any form of verb be. Example, I'm writing in the bracket. Example is, am, are, was, were, okay, etc. After any form of verb be, pronoun is used in subjective case. A pronoun is used in subjective case. Now, example, it is me who helped you. Who helped you. Or if I say, it is I who helped you.
It was he at the door. It was he or him at the door. Okay, I've written 3 sentences over here, and the rule is also written. We are talking about any form of verb be. Be की कोई भी form क्या हो सकती है? Is, am, are. This is used in the present tense. And was and were. This is used in the past tense. There are several other forms like been, being. Now, pronoun किस case में use होएगा? इनके बाद में subjective case में. Remember this thing. Subjective case. So I have written it is. So here is used. It is a form of verb be. Okay. So here I have used me. This is wrong. क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या आना चाहिए? इट इज आई शुड कम. इट इज आई हु हेल्प्ड यू. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. एंड इट वॉज, अब यहाँ पर वॉज यूज हुआ है पास्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट टेंस था, बट वॉज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब बी. सो इसके बाद में कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा. सब्जेक्टिव केस कौन सा है? ही है या हिम है? सब्जेक्टिव केस इज ही. हिम इज रॉन्ग. So the correct sentence is it was he at the door. So this was the rule of pronoun. Now we'll discuss some ask yourself exercises. We'll discuss some ask yourself exercises of your module. Let's see. So some more rules of pronoun are here written on the board. Let's see. A singular pronoun is used if the nouns are connected by each and every. When nouns are connected by each and every, see the sentence. I've written an example. There are nouns, girl and women are nouns. They are connected by every. ठीक है, हर लड़की और हर एक औरत की बात हो रही है. ठीक है. So here I have used singular pronoun. I have used her over here. Okay. I haven't used their. Every girl and woman has brought their purse. That is wrong. I will use singular pronoun here. सिंगुलर प्रोनाउन हर. अगर यहाँ पर दियर लिख देते तो गलत हो जाता. एंड स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. सो दिस वाज द रूल. नेक्स्ट रूल सेज व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन. Collective noun you all know, which denotes a group. So whenever we are using a pronoun to denote any group, okay, then it should be used in singular form. अब एक collective noun की जब हम बात करेंगे, for example team, यहाँ पर team एक collective noun है. जब भी ये whenever a pronoun stands for a collective noun, यहाँ पर team और यहाँ पर has left its headquarters. Now please pay attention. पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, और जो हमने प्रोनाउन यूज करा है उसको नोट करेंगे. सेकेंड सेंटेंस, द टीम ट्राइंग, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन दियर है. Now you identify the difference. In the first example, I have used a singular pronoun, but in the second example, collective noun is same. यहाँ पे भी टीम था, यहाँ पे भी टीम था, लेकिन एक के साथ सिंगुलर यूज किया, एक के साथ प्लूरल यूज किया. ऐसा क्यों? ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं. अब आप कहोगे when a pronoun stands for collective noun it should be used in singular form. Yes. अब आप कहोगे कि मैम ये वाला सेंटेंस तो अकॉर्डिंग टू द रूल है, लेकिन ये वाला सेंटेंस तो आपने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ तो प्लूरल है. तो ये कैसे सही हो सकता है? मैंने इस पे भी टिक मार्क किया है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. यहाँ पर टीम का मतलब एक सिंगल यूनिट है. ठीक है. द टीम हैज यूज हो रहा है. यहाँ पर वर्ब भी आप देखो, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और नीचे वाले सेंटेंस में आर प्लूरल वर्ब है. तो यहाँ पर जब सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है इट मीन्स यहाँ पर टीम को एक ही यूनिट माना गया है. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पर उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया. Here team represents a complete unit. So we have used a singular verb and a singular pronoun its. Okay, the team has left its headquarters. In the next sentence, the team is a collective noun, but a plural verb it is using are trying. अब यहाँ जब plural verb use हुई मतलब team एक single unit नहीं. Here team represents separate members. Here it represents separate members. Okay, pay attention to this point. यहाँ पर टीम का मतलब है
सेपरेट मेंबर्स, और यहां पर टीम का मतलब था एक सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। सो जब सेपरेट मेंबर्स की बात हो रही है, इट मींस बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमने यहां पर एक प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब, सी। और यहां पर सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। So you can say this is an exception to rule number 1. पहला वाला सेंटेंस तो बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है रूल को, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर सेपरेट मेंबर्स को डिनोट कर रहा है कलेक्टिव नाउन, तब हम एक प्लूरल प्रोनाउन लेंगे, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेट मेंबर्स को डिनोट ना करके पूरा एक ही यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। द नेक्स्ट रूल, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे हैं एंड से, रेफर टू द सेम पर्सन, और अगर वो एक ही इंसान को दर्शाते हैं, ठीक है, देन द प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड इन देयर प्लेस। सी द एग्जांपल, आई हैव रिटन द टीचर एंड डॉटर, द टीचर एंड डॉटर। बहुत ध्यान से देखना है, दोनों एग्जाम्पल्स को देखना है। पहले वाले में मैंने द सिर्फ टीचर के आगे लगाया है, ठीक है, तो हमारा पहला नाउन तो था टीचर और दूसरा नाउन था हमारा डॉटर, और ये कनेक्ट किससे हो रहे हैं? एंड से, और द सिर्फ पहले नाउन के आगे लग रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक सिंगुलर वर्ब यूज करी है, यहाँ पर वर्ब भी एक सिंगुलर है, और यहाँ जो प्रोनाउन यूज किया है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। क्या लिखा है हमने? सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड, तो देखो हमने यहाँ पर एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को यूज कर दिया, हर को, ठीक है। अब आप देखेंगे अगले सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में क्या हो रहा है? द मैंने यूज किया है टीचर के आगे भी, और ये एंड से कनेक्ट हो रहा है, और वापस से मैंने द यूज किया डॉटर के आगे। क्या ऊपर मैंने द लिखा डॉटर के आगे? नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा है। पूरा सेंटेंस सेम है, बस द का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर द लिखा है, और फिर आगे मैंने एक प्लूरल वर्ब लगाई है, प्लूरल वर्ब। दिस इज सिंगुलर बट दिस इज प्लूरल, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई थी तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया था, और यहाँ मैंने प्लूरल वर्ब लगाई थी तो मैंने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है, प्लूरल प्रोनाउन। सो दिस इज अ डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से देखते हैं, यहाँ पर पहले सेंटेंस में द टीचर एंड डॉटर, ये एक ही इंसान है, ये अलग अलग दो इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ही बात कर लो, आई एम अ टीचर ऑल्सो, मैं एक टीचर भी हूँ और एक डॉटर भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ मैं, हूँ तो एक ही इंसान, यस। तो एक ही इंसान है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो द टीचर एंड डॉटर हैज, सिंगुलर वर्ब, फुलफिल्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीचे वाले सेंटेंस में द टीचर एंड द डॉटर, जब मैंने दोनों नाउन के आगे द लगा दिया ना, इट रिप्रेजेंट्स कि ये दो लोग अलग अलग हैं। यहाँ पर द टीचर मीन्स ये एक अलग इंसान है, एंड द डॉटर ये एक अलग इंसान है, ठीक है। तो मान लो मैं खड़ी हूँ और कोई और लड़की खड़ी है, तो मैं टीचर और कोई डॉटर खड़ी हुई है, तो दो इंसान हो गए, तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई एंड प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया, दियर। The teacher and the daughter have fulfilled their responsibility. So these were the rules of pronoun. अब एक last rule बचता है आपका pronoun का, and then we'll discuss the exercises. So we continue with the rules further. The last two rules of pronoun. When two singular nouns are joined by either or neither nor, then we use a singular pronoun with them. Okay? See example. Either Rohan or Mukul. Here there are two nouns, one is Rohan and the other noun is Mukul, and they are connected using either or. Okay, so two singular nouns are joined by either or. Has done his work. See, Rohan and Mukul were two nouns and we have joined them using either or. Either का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, ठीक है, या तो रोहन ने या फिर मुकुल ने ये काम किया है,
तो यहाँ पर हम हैज डन हिज वर्क बोलेंगे, हैज डन दियर वर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक की ही बात हो रही है, तो डेफिनेटली वील यूज आवर कॉमन सेंस, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, ठीक है, हिज, दियर नहीं आएगा। इधर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, तो या तो मुकुल ने किया या फिर रोहन ने किया, ठीक है, सो सिंगुलर प्रोनाउन हिज। नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड हैज ब्रॉट। अब यहाँ पर दो हमारे पास एग्जाम क्लूज दिए हुए हैं, अब इनमें से सही कौन सा होगा, अंडरस्टैंड। नीदर रोहन, तो ये तो हमारा नाउन 1 हो गया, और हिज फ्रेंड ये हमारा नाउन 2 हो गया, एंड दे आर कनेक्टेड यूजिंग नीदर एंड नॉर, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीदर नॉर का मतलब है ना तो रोहन और ना ही उसका फ्रेंड, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। हैज ब्रॉट, अब दोनों में से कोई भी नहीं लाया, बात तो एक की ही हो रही है, ना तो रोहन लाया ना सो उसका फ्रेंड लाया, तो यहाँ पर हिज आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। दियर नहीं आएगा क्योंकि दियर एक प्लूरल प्रोनाउन है, और रूल कहता है कि ईदर और से जब या नीदर नॉर से जब दो कनेक्ट होते हैं दो नाउन्स, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, इसलिए हिज फाइन। यहाँ पर अगर दो गर्ल्स की बात होती, अगर यहाँ पे मैं बोलती ईदर सलोनी और हर फ्रेंड, ओके, तो मैं यहाँ पर हर लगा देती, ठीक है। सो accordingly we'll see the sentence. Now the last rule, इधर और का मतलब समझ आ गया, या तो ये या फिर ये, एंड नीदर नॉर, ना तो ये ना वो, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, रिमाइंड करा देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एक नाउन को रिलेट करता था, और जिस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है वी कॉल इट एंटीसीडेंट, ओके। सो दिस रूल इज बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन, it must be of the same number and person, नंबर सेम होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का, और पर्सन सेम होना चाहिए एज इट्स एंटीसीडेंट। मतलब अगर इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, ठीक है, और वो जिस भी पर्सन में यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, आई हूं इज योर फ्रेंड शैल सपोर्ट यू फॉर एवर, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं तुम्हें सपोर्ट करूंगा हमेशा, ठीक है। यहां पर मैंने आई यूज करा था, ठीक है। सो यहां आई यूज करा था और रिलेटिव प्रोनाउन हूं यूज करा था, तो हूं रिलेट्स टू आई ओवर हियर, ठीक है। अब हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है। अब आप देखो, आई हूं, नीचे भी हमने हूं यूज करा रिलेटिव प्रोनाउन, और किसके लिए यूज किया था, आई के लिए, तो आई क्या हो गया हमारा, एंटीसीडेंट हो गया। यहां पर एंटीसीडेंट क्या है हमारा, एंटीसीडेंट हमारा आई है और रिलेटिव प्रोनाउन हूं है, ठीक है। तो हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई, आई के साथ में क्या हम इस बोलते हैं, नहीं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। क्या आपने ये बोला आई इज सलोनी, नो, व्हाट विल आई यूज, आई विल से आई एम सलोनी, तो इसलिए यहां पर आई हूं एम योर फ्रेंड, क्लियर। आई हूं इज योर फ्रेंड गलत है, अगर यहां पर आई नहीं होता, अगर यहां पर ही लिखती मैं, अगर मैं यहां पर ही लिखती तो फिर ये सही था, उस केस में ये सही था, ही हूं इज योर फ्रेंड, ठीक है, ही के साथ में इज आएगा, लेकिन अगर आई लिखा है तब तो फिर इज नहीं आ सकता, रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस वाज द रूल। सो all the rules of pronoun are complete over here. Now we'll discuss the module exercises.